you keep all the drawing instruments with you, with the paper graph sheets. Please, it is very, very, very important. Because if you don't draw yourself, no, you never understand the things. Okay, so I think that shear test is clear to you. Of course, the experiment once you see in the laboratory, no, so definitely you will understand it. It's not that much difficult, and we'll do it also by virtual lab. Also, we will do, and then here also we will do. And today I will take triaxial shear test. Same aim to find the C and phi. But here we use different drainage condition, and it is a little bit advanced compared to direct shear test, and it is not that much simple. So in direct shear test, what we do, we apply normal load, got the shear load, we draw a graph. A normal load versus shear load, a straight line you will get. You bring that straight line, drop it on the y-axis. So whatever the angle it makes with the horizontal, no, it is phi, and whatever the intercept it made with the y-axis, no, it is c. So in this way, we find c and phi. C is cohesion, whereas phi is angle of shearing resistance or internal friction. C is cohesion, phi is function of friction, and these two combinedly are called what? Shear strength parameters. This is a common question to be asked in the Viva. What are the shear strength parameters? So shear strength parameters are C and phi. C is cohesion, phi is angle of shearing resistance. Angle of shearing resistance. I hope till now everything is clear to you. Then I explained what are the advantages of direct shear test and what are the limitations of direct shear test. That also I explained you. This is the very common question to be asked. You should remember it. Then now we solve the problems, to the problems, and some of you were complaining that, sir, we are not getting the exact value of phi. Of course, getting whatever the answer in the book may not be possible, but it should be nearer only. Suppose if in the book it is 22 degrees, means it should be in between 20 and 23 degrees. Not beyond that. If in the book it is given 22 degrees and you are getting 40 degrees, means somewhere you are wrong. So C and phi, you will get it with the horizontal, or sometimes measuring also may not be, measuring may also be a problem. So please take care that 2-3 problems I have solved. I will give you more in assignment. Next assignment I will give you. So please complete all the assignments. You have to upload it. So why I'm telling is not to torture you or make you work. But the thing is, if you solve the assignment, at least by reading something, by seeing something, you will understand the concepts and important points of those chapters. That's why I have given those assignments. So 4 assignments I have given. So 5th and 6th I will give, and few tests also I have taken. Few more tests I will take, and most probably this week we are going to complete this chapter. Next week I will start last chapter, that is earth pressure. Okay, so if we complete that one and still exams dates are not declared, means we will start gate questions. So from every chapters we'll take MCQs, difficult questions, gate questions, and we will solve in the classroom. Like this we will continue till your exams. Okay, any doubt, any suggestion, anything if you want to suggest, you can suggest. Most of the students are not at all attending the class. After telling so many times also, remember, this is the thing, we don't know when it is going to end, Corona. So again, it is increasing. So again, there are chances of lockdown, chances. So again, same thing may be there. So see, this is, I mean, making you easy to pass. This is making you to rest in the house. But if you utilize it properly, if you study, then it is okay. But if you don't study and go according to the flow of the time, just you are passing the degree. So in the end, it is very, I mean, very, very harmful for you. Remember this one. But still I am telling you, time is there. Whether it is offline class, whether it is online class, it is not going to affect anybody else, but it is going to affect you people only. So whatever the material you are getting, whatever the teachers are teaching you, utilize it, understand it,
practice it. Then you can discuss with your friends, or you can call me. Sir, we are not understanding here, this is the problem. If in this way, if you study, then it is beneficial. Without still knowing the concept, without knowing the subject also, if you even pass, definitely you are going to pass, but that is not at all useful. Remember, that is not at all useful. Okay, so please take care of it and study well. So now we will go for this triaxial test. So tri means what? Can anybody tell me what is means by tri? T-R-I, tri. Di. D-I, di. Tri means 3, sir. Yes, very good. Tri means 3. Axial means axis. So here we are applying 3 axes. All the X, Y, Z axes we are using. Therefore, this test is called triaxial test. That's the first thing you should do. So this is the setup. Just you see, and we are having in the laboratory also. So we keep here soil specimen. This one is soil specimen. This is the soil specimen. Soil specimen एक cylinder में हम direct ground पे जाके निकाल के लाके उसको ऊपर membrane लगा के इसमें रख देते. Okay. Second is porous disc. Yeah, here a porous disc is there. When it is porous means we are allowing drainage condition. 3 is top cap. Okay. So here is porous and here is also porous is there. So when both sides porous means it is double drainage. Like this you can understand. Top cap. So above the porous stone, there is one cap is there top. Then fourth is rubber membrane. On this soil specimen, rubber membrane chadate hum log. That also I will show you. Then perspex cylinder. So fifth is, this is the cylinder, of course. And then stainless steel ram. Of course, this is ram here. It is connected. Of course, from this, the load will come. Then air release valve. Seventh one is air release valve. Here, from here, air is released. Top drainage tube. The one tube will be there inside. This is the top drainage tube. Bottom drainage tube. Ninth is bottom drainage tube. This is the top drainage tube. From here, if you open this one, this is go. From open this one, this will go. If you are stopping or opening based on this one, we can decide it is single drainage or double drainage. Okay. Then connections for drainage or pressure measurements. Of course, these are the connections. You open karo to open ho jate, band karo to band ho jate. Then 11th one is here a cell fluid inlet. Whatever the water you are entering is from here. Rubber rings, of course, around this one. Around this one, rubber rings will you have to put. Scaling ring and then axial load throw proving ring. Proving ring अब ये method नहीं रहा, ये पुराना है. अब तो खैर हमारे पास digitalized है. So this is all about all the components of triaxial test. This is all about a triaxial test. So what happens actually in triaxial test? What happens in direct shear test? I will tell you. We apply normal load. After applying the normal load, there will be shear in the sample, whichever soil you have kept. So that shear is measured, and that is the shear load. This is the main thing we want. I'm talking about the direct shear test. We apply the normal load, we measure the shear load. We draw the graph, normal load versus shear load. We draw the graph, normal load versus shear load, and you will get C and phi from that one. C and phi from that one. Triaxial tests are performed on a cylindrical soil samples. Of course, soil sample जो रहता है ये cylindrical रहता है. Direct shear test में cubical रहता है. आपका जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट बॉक्स है उसमें हम रखते सैंपल को. यहाँ पर सिलिंड्रिकल रहता. और अगर से आपको अनडिस्टर्ब्ड लाना है तो मैं आपको बताया, वी आर वेरी लकी नाउ, वी आर हैविंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द लैबोरेटरी. हम फील्ड में जाके डायरेक्ट लेकर आएंगे. दैट आल्सो आई विल शो यू हाउ द specimens are brought. How the specimens are brought.
the samples have a normally a height to diameter ratio of 2:1 and usually 3.8 centimeter in diameter and 7.6 centimeter in height, although some machine larger samples are used. Of course, मतलब whatever the sample you are using, sample हमको लेकर आना पड़ता है, मिट्टी का सिलेंडर, मिट्टी का सिलेंडर हमको लाना पड़ता है, तो वो लाने के लिए तो वो अनडिस्टर्ब हो जाता, तो हम क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल स्टील का क्यूब रहता, ओपन केस, उसको जमीन पर रख के ऊपर से रैमर से मारते, वो जमीन में दब जाता, बाद में उसको निकालते, निकाल के अब सवाल ये उठता, सर आप मिट्टी अंदर से केस में से कैसा बाहर निकालते, वो हाथ से नहीं निकाल सकते आप, सो दैट वी विल कीप इन अ मशीन, तो वो मशीन क्या करता, आराम से अंदर का जो सैंपल है सॉइल का सिलिंड्रिकल वो बाहर आता, मींस इन ट्रायक्सियल टेस्ट what we are using is we are using cylindrical sample, and remember its diameter is 3.8 centimeter and its height is 7.6 centimeter. Try to understand the things. Once you do this experiment or just you see the experiment somebody is doing, even if you see, then most of the things after that, if you read this one, then the things will be very easy for you. But now imagining the thing, of course it is difficult for anybody because you haven't seen the triaxial apparatus at all. So if I tell you, teach you, then also you will find it difficult to get into mind. Okay, so now this is about triaxial test sample. This should be 3.8 centimeter in diameter and 7.6 centimeter in height, although some machines larger samples are used. Full stop. The length of specimen is kept about 2 to 2.5 times its diameter. The length of specimen is kept about 2 to 2.5 times its diameter. Okay, the length of this pen अब कितना है, उससे भी 2 and 2 वो सब फिक्स है, वहां पर, यहाँ पर तो 3.8 है तो 7.6 में डबल लिया है यहाँ पर. Okay. The test equipment is specially consists of a high pressure cylindrical shell made of perspex fitted between the base and the top cap. वो सब आप देख लेते. 3 outlet connections are generally provided through the base. Of course, seal fluid inlet, pour water outlet, and bottom of the specimen and drainage outlet. It's some outlet है. A separate compressor is used to apply the fluid pressure, of course, in the cell. Pore pressure is developed in the specimen during the test. Can be measured with the help of a separate pore pressure measuring instrument. इस बात को नोट करो आप. यहां पर क्या होता, मिट्टी में अगर से जो पानी है उसका जो प्रेशर रहता, पोर प्रेशर, we can measure here separately. This wasn't available in direct shear test. So combined we were taking there, but here it is not the case. यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी कोई भी प्रेशर अगर से किसी सॉइल स्पेसिमेन पे आ रहा, तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर. ये याद रखो आप, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर. इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जो मिट्टी के सॉलिड है ना, वो जो ले रहे उसको इफेक्टिव बोलते हैं, और जो अंदर का वाटर है वाइड्स में जो वो ले रहा, इट इज द पोर वाटर प्रेशर. इन दोनों को हम जोड़े तो टोटल स्ट्रेस मिलता. तो हम when we performed direct shear test, there it wasn't there. We didn't have to measure the pore water pressure separately, but in triaxial test you can measure separately the pore water pressure. That is the biggest advantage here. There what we used to take, टोटल स्ट्रेस ही हम लेके करते थे, पोर वाटर प्रेशर हमारे पास सेपरेट नहीं था. तो डायरेक्ट में और ट्रायक्सियल में ये सबसे मेजर डिफरेंस है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ. A separate compressor is used to apply the fluid pressure in the cell. Pore pressure is developed in the specimen during the test and can be measured with the help of a separate pore pressure measuring equipment. The sample is fitted between rigid end caps and covered with a rubber membrane. Of course, end caps में specimen को रखते और ऊपर क्या रहता, membrane रहता.
The sample is fitted between rigid end caps and covered with the rubber membrane. It is then placed in a perfect cell which is fitted with water, filled with water of course. बाद में हम ऊपर से उसके अंदर पानी भरते. The sample is subjected to an all-round pressure sigma 3 by applying pressure to the water in the cell. So sigma 3 है, that is the pressure applying to the water in the cell. An additional vertical stress, that is deviator stress, sigma d is equal to sigma 1 minus sigma 3, is then applied by loading the sample through a ram bearing on the top end. So from the top, what stress we are applying? We are applying deviator stress, and deviator stress is equal to whatever the normal stress is there, sigma 1 minus sigma 3. The ram is forced down at a constant rate, recording the load on the plunger until the sample fails. The above test is repeated on different samples under different cell pressures, and the results are interpreted by plotting Mohr's circle. So different sigma 3 के लिए, different pore water pressure के लिए, different load लगा के हम लोग ये case find out करते हैं, and then we draw the Mohr's diagram, Mohr's circle diagram, and find the failure pressure. The horizontal and vertical planes are the principal planes. The horizontal plane and vertical planes are principal planes. The conditions of the time of failure. The horizontal vertical principal planes. The minor principal stress sigma 3 equals to the confining pressure. अच्छा, sigma 3 को हम क्या बोलते हैं? Confining pressure, याद रखो. And the major principal stress sigma 1 is the additional vertical stress plus the cell pressure. मतलब sigma 3 मतलब जो additional pressure लगा रहे vertically plus cell pressure, that is the sigma 1. So what we get here is sigma 1 and sigma 3. More circles are drawn for different tests, and a common tangent to them is the failure envelope as gives the shear strength parameters C and phi. तो वहां पर क्या करते थे हम? देखिए यहाँ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसा डिफरेंस है. वहां पर क्या करते थे हम? नॉर्मल लोड एक्स एक्सिस पे, फिर वर्टिकल पे और shear लोड, एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे, and whatever the intercept it makes, C, that is the cohesion, and whatever the angle it makes with the horizontal, that is the phi. This is a simple case. Problems also you solve. I think there should not be any difficulty to understand this concept there. Isn't it clear? है ना? Now direct shear test की problem करें आप, problem solve भी किए कुछ लोग. It is my request, please सभी लोग solve करो तो आपको समझ में आता. लेकिन यहाँ पर क्या है मालूम है? हमको sigma 1 मिलता, sigma 3 मिलता. Sigma 3 is confining pressure or pore pressure. So now we have to draw. दो टेस्ट करना, तीन टेस्ट करना. एक मोर सर्कल आया, फिर एक मोर सर्कल मतलब सर्कल नहीं रहता, पूरा नहीं लेते हम, सेमी सर्कल उसका हाफ लेते. एक मोर सर्कल होगा, दूसरा मोर सर्कल होगा, तीसरा मोर सर्कल होगा. ये तीनों के को एक टैंजेंट बनाते. टैंजेंट मतलब उस लाइन को बोलते जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता. तो ऐसा एग्जैक्टली मिलना तो मुश्किल है, लेकिन आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ जो इन तीनों सर्कल्स को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा सकता. Sometimes it is difficult on the graph sheet, but at least एक पॉइंट पे नहीं तो भी एक ऐसा टेंजेंट बनाओ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आप, which is going to touch all the three Mohr circles or four more, whatever readings you are taking. कितने रीडिंग लेंगे आप उतने Mohr सर्कल बनेंगे. एक टेंजेंट खींचो और वो जो टेंजेंट रहता उससे आप निकाल सकते C और phi. And our aim is to find the C and phi. Our aim is to find the 2 and phi. So तो यहाँ तक प्लीज आपको शायद पूरा तो नहीं मालूम होगा, लेकिन एटलीस्ट एक ब्रॉड आइडिया आ गया है क्या? What is triaxial shear test? If you have any doubts, please ask anything. Is it clear? What is the difference, major difference between direct shear test and shear triaxial test? और डायरेक्ट shear test का रिजल्ट कैसा निकालना वो तो आप ग्राफ बना लिए, इसका मैं बताऊंगा आगे आपको. When you solve the problems, you will come across what is a triaxial shear test, how it is analyzed. That we will learn from problems. But till now, whatever the things I told you, whether it is understood, please. Yes, sir. Okay, very good, beta. Thank you very much. So now
we will go how this triaxial compression test is performed in 2 stages. Okay, what is the first stage? The first stage in which after the sample is set to the triaxial cell pressure is applied to the sample to subject it to normal stresses only. तो यहाँ पर सिर्फ हम पहले स्टेज में क्या करते हैं, सिग्मा 3 निकालते. The second stage in which additional axial stress ऊपर से भी लगाते and shear stress are induced in the sample and continuously increased the additional axial stress until the sample fails. मतलब पहले में क्या है, हम सिर्फ पानी अपना डाल के जो सिग्मा 3 है, जो पोर प्रेशर है, that only we are going to find, and in the second one more direct stress we apply and we find the sigma 3. These are the sigma 1. So these are the 2 important stages where we apply the loads and find the stresses, isn't it? So during the 2 stages, measurements are made of the stresses applied, of the induced pore water pressure or the changes in the sample volume of the axial stress. जो होता है चेंज हम देखेंगे. So this is the sample. देखिए ये जो है इसका डायमीटर है, ये इसका लेंथ है. इट इज दी डायमीटर एंड लेंथ. इस टाइप का सैंपल रहता है आपका. हाँ, तो ये डायमीटर है, ये लेंथ है, और यहाँ पर ये पोर प्रेशर है. सिग्मा 3 is the pore pressure because of water. Even here something extra you are applying, so that sigma 1 is equal to sigma 3 plus sigma d. So sigma 1 is equal to major principal shear and sigma 3 is equal to minor principal shear. This you remember. And sigma 1 is given by sigma 3 plus sigma d, where sigma d is deviator stress, that is the additional of vertical stress, whatever you are applying here. So sigma d is equal to failure load divided by deformed cross sectional area. जो failure load, जब failure load जितना apply हो रहा, that divided by cross sectional area. Cross sectional area कैसा निकालते हम? A dash is equal to A by 1 minus epsilon. Epsilon means again strain. Strain is delta L by L. ये सब सॉम का है. So ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4. लेकिन वो फेल होता ना, फेल होने से स्ट्रेन अप्लाई होता, इसलिए जो डिफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया फेल होने के बाद जो एरिया आता, दैट वी टेक बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन. So here some calculations he has made. Once again I will tell you, this is the sample is टाइप का रहता, सिलिंड्रिकल रहता, इसका डायमीटर रहता 3.8 सेंटीमीटर, इसका हाइट रहता 7.6 सेंटीमीटर. 7.6 सेंटीमीटर. हियर ये जो सिग्मा 3 है, दिस इज द पोर प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर, और दिस इज वाटर प्रेशर सिग्मा 3. एडिशनल प्रेशर एक्स्ट्रा आप ऐड करते वर्टिकल स्ट्रेस से, दैट इज डिविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी. सो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 दोनों ऐड करें तो जो आता, दैट इज सिग्मा 1, that is the major principal stress. सिग्मा 1 मालूम हुआ आपको, सिग्मा 3 मालूम हुआ, सिग्मा डी मालूम हुआ. कुछ चीजें नहीं भी मालूम हो रहे, इमेजिन करो जब आप एक्चुअली करेंगे तो आपको मालूम होता. तो सिग्मा डी कैसा निकालना? जिस लोड पे फेल्यूर हो गया आपका सैंपल, जिस लोड पे आपका सैंपल फेल्यूर हो गया, दैट लोड डिवाइडेड बाय डिफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना बहुत इजी है. डायमीटर आपको पता रहता पाई बाय 4 डी स्क्वायर, pi by 4 d square. But what he wants is, he wants deformed cross sectional area. Means when it fails, so when it fails, the deformed cross sectional area is given by a dash is equal to a upon 1 minus epsilon. Though that is strain, epsilon is strain, and strain is equal to delta L by EL. So delta L is equal to deformation, L is equal to original length, and A is equal to original cross sectional area, that is pi d square by 4. That is pi d square by 4. These all are the things you should know. ओके, शेयर स्ट्रेंथ कैसा निकालते हैं? यहाँ पर देखो, ये स्पेसिमन, फर्स्ट स्पेसिमन है. सेल प्रेशर आपको मालूम होता सिग्मा 3, डिविएटर स्ट्रेस आप अप्लाई करें सो मालूम होता सिग्मा डी एक्चुअली. तो इन दोनों को आप ऐड करो, आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलता सिग्मा 1. ओके, तो अब ये जो है ये एक मोहर सर्कल है. मोहर सर्कल में देखिए, ये है आपका सिग्मा 3, ये है आपका सिग्मा 1. इस
सैंपल के लिए आप ड्रॉ करें। मोर सर्कल कैसा ड्रॉ करना, मोर सर्कल है क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप इतना ही, व्हाट इज मोर सर्कल, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स तो पढ़े आप, लेकिन एनालिटिकल मेथड पढ़े, 4 केसेस उसमें पढ़े। मोर सर्कल पहले सिलेबस में था सॉम में, अब आप नहीं है बोल रहे, मुझे तो नहीं पता, बिकॉज अब मैं सॉम पढ़ाना बंद कर दिया। अर्लियर आई यूज्ड टू टीच सॉम ओनली, पहले सॉम में ही पढ़ाया था आपके सीनियर्स को, तो ये तब मेरे को, तब तो खैर था। और मोर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। फिलहाल आप ये मोर सर्कल ड्रॉ करें फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए, ये ऐसा आता, इतना हाफ बस है, आपको नीचे का पोर्शन जरूरत नहीं है। उसी तरह सेकेंड रीडिंग ले लो आप, यू टेक सेकेंड रीडिंग, एंड सेकेंड रीडिंग के लिए फिर सिग्मा 1 सिग्मा 3 ले लो, यहां से सिग्मा 1 मेजर करो, यहां से सिग्मा 3 मेजर करो, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, दोनों का सेंटर ले लो, सेंटर पॉइंट ले लो, उसको रेडियस बनाओ और फिर सर्कल ड्रॉ करो। अब फिलहाल इतना तो याद रखो, देखिए ये सिग्मा 3 यहाँ पर 10 है, ये 20 है, तो यहां से 10 तक एक पॉइंट ले लो, यहां से 20 तक एक पॉइंट ले लो, फिर ये 10 है, ये 20 है, तो ये 10 है, यहाँ 5 पर एक पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट, उसको रेडियस इतना ले लो 5, और एक सर्कल ड्रॉ करो। आ रहा बेटा समझ में कैसा ड्रॉ करना सेमी सर्कल? एटलीस्ट sigma 1 and sigma 3 you will get from the experiment. After that I performed here 2 practicals for 2 specimens, so that can be done for 3, that can be done for 3, 4, 5 or 6 also. So here only 2 for 2 specimens I am performing. कि कैसा बनाना मालूम होगा क्या आपको सेमी सर्कल? देखिए No, sir. देखिए बेटा, सिग्मा 3 मालूम है आपको, सिग्मा 1 मालूम है, ये तो मिल जाता, ये आपको रेडीमेड दिया सो रहता, इसका बारे में मत सोचो। तो अब यहाँ ये ओरिजिन से ये पहला फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए बना रहा हूं मैं, ये ले लो आप सिग्मा 3, और यहीं से आप यहां तक सिग्मा 1 ले लो, ले लिए। अब ये 2 जो पॉइंट है इनका सेंटर ढूंढो, और वहां पर आपका कंपास रख के या रेडियस लेके सर्कल बनाओ। उसी तरह सेकंड स्पेसिमेन का बेटा, यहां से लेके यहां तक सिग्मा 3, और फिर यहां से लेके यहां तक सिग्मा 1, फिर उन दोनों के बीच का पॉइंट ले लो और फिर ड्रॉ करो। कुछ आइडिया आ रहा? वैसे बनाओ तो आपको क्लियर आइडिया आता, बनाएंगे हम अभी, वैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कैसा बनाना? Yes, sir. Idea got it. ओके ओके बेटा। सो नाउ देन यू ड्रॉ द फर्स्ट सेमी सर्कल, उसी तरह सेकंड सेमी सर्कल। अब आप इन दोनों को एक ही पॉइंट, यहां पर भी एक ही पॉइंट को, यहां पर भी एक ही पॉइंट को ज्वाइन हो गए जैसा एक टेंजेंट बना दो। समझ रहे आप? इस सर्कल को भी एक ही पॉइंट पे टच होना, इस सर्कल को भी एक ही पॉइंट पे टच होना, मतलब दोनों को एक एक जगह टच हो गए जैसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, टेंजेंट दोनों के लिए। और यहां पर ये है C, और वट एवर द हॉरिजॉन्टल एंगल इट मेक्स, एंड दैट इज कॉल्ड phi. This is the intersection C, and whatever the angle horizontal it is making, it is called phi. It is called phi. Got it? So now effective stress sigma dash is equal to sigma minus u, हमको मालूम है यहाँ पर, that is u is equal to pore pressure. So sigma 3 plus sigma d is equal to total stress. Sigma 3 is equal to sigma 3 minus u. Sigma 1 dash is equal, मतलब आप अगर से ये सब कॉमन के लिए बनाए, स्पेशली अगर से आप u एक आपके पास पोर वाटर प्रेशर है तो डैश लगा के उतना माइनस करो, that you will get. This is cell pressure and this is the effective measure principal shear. So this is the Mohr circle for different, I mean, the Mohr circle for one particular cell pressure shown in figure A and B. Pure frictional, ये phi psi के लिए Mohr circle ऐसा रहता, और ये C के लिए ये horizontal रहता,
यहाँ पर ये ओरिजिन से पास होता, सेम है, वहां यहाँ डायरेक्ट में सेम है. हियर वी कंसिडर पोर वाटर प्रेशर. So please, these are the different Mohr circles. Go through it, and any doubts you can ask. When you do solve the problems in the second half now, you will understand these things very well. So please do it yourself only. If you solve it, then only you can understand. Sir, Yes, I have one doubt yes. that in direct stress problems, we solve the problems on graph paper. Okay, sir. So in that, whatever readings we are going to take, that readings are not fixed, no? Whatever readings we are going to take, C and the value of C and 5 will going to change, no? Of course, these are C and 5. Yes. Problem क्या So है? that's why my yesterday's answers are different from your answers. C's values are correct, but the 5 value is different. Okay, it is different. It can be understood, but this should not be beyond the limits. No. 1-2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक तो ठीक है बेटा, लेकिन मैक्सिमम इतना चेंज क्यों आ रहा? तो या तो आप मेजरमेंट में गलती कर रहे कहीं, या कुछ ना कुछ गलत हो रहा, उसको आप सुधार लो, या मेरे सामने बैठ के कभी आप ग्राफ बनाओ, मैं बताता हूँ आपको कहाँ गलती हो रही, तो मालूम होता मुझे. Okay, sir. या नहीं, कभी व्हाट्सएप पे लाइव वीडियो करो और ड्रा करते समय देखो कहाँ गलती हो रही. देखो देखिए 1-2-4 डिग्री तक ठीक है, लेकिन आप बियॉन्ड द लिमिट उतने गलती तो नहीं हो सकता. 8-10 डिग्री का फर्क नहीं आ सकता बेटा, वो क्या आंसर से. 1-2 डिग्री तो नॉर्मल ही है, क्योंकि आप स्केल लेने में कहीं नीचे ऊपर हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है. ऐसा देखो, जब सी का वैल्यू बराबर आ रहा तो वो बराबर आना चाहिए, या ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनाता है एंगल, दैट एंगल दिखे. सी डिफरेंस बिटवीन, आई विल टेल यू, डायरेक्शन एंड एनालिसिस में, यहाँ पर हम मोहर सर्कल लेके उसके टेंजेंट्स को बनाते, यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट्स आते. वहां पर सिर्फ हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू टेक नॉर्मल लोड एंड shear लोड. वी यूज्ड टू टेक नॉर्मल लोड एंड shear लोड. आई होप एटलीस्ट ना आपको अगला सेमेस्टर तो भगवान करे कम से कम आपको एक ऑफलाइन क्लासेस होना चाहिए. ऑफलाइन क्लासेस होने से क्या है, आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते. बट अब मजबूरी है, तो जैसा है उसी में आपको चला लेना है. या मुझे पूछो, या कुछ फोन करो, या आप नजदीक के हैं तो कभी आ सकते. इट्स ऑल अप टू यू. बट सी, अब ये पैंडेमिक का बहाना हम गए साल शुरू में बनाए तो ठीक है, अब आप इसको बहाना बना के अपना करियर खराब नहीं कर सकते. ठीक है, ये बात आप नोट करो. मैं उस वक्त पैंडेमिक था, उस वक्त कोरोना था, मैं नहीं पढ़ी, हमको नहीं पढ़ा है, हमको ऑनलाइन क्लासेस लिए, देशमुख सर पता नहीं क्या बोले क्या नहीं, ये सब आप बहाने नहीं चलते. पढ़ाई आपको करना है. इन द एंड रिजल्ट वी वांट. एनीबॉडी विल एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम यू. See, when you are successful, nobody is going to ask you. Even your big mistakes are also swallowed. They are excused. But when you are unsuccessful, even if you are regular and sincere, then also you will be targeted. This is the rule our society follows. तो इसीलिए क्या है मालूम है, सक्सेसफुल होना जरूरी है. तो इसीलिए आप पढ़ाई करो, बहाने मत ढूंढो. ऑनलाइन था ये, कितना हो सके उतना अपने दोस्तों से डिस्कस करो, दोस्तों से बातें करो, नजदीक घर है तो मिलके कंबाइंड स्टडी करो, कुछ बनाओ. हाँ, तो ये सही बनता है. देखो चुप टाइम पास कर रहे, वक्त गुजार रहे, कोरोना आया कोरोना गया, हमारा क्या ऐसे चल रहा मजे में, मार्क्स फुल मिल रहे, 72% है, 81% है, वो आपको हेल्प करने वाला नहीं है. ओके, सो दिस इज द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इसका रिलेशन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ. इसका भी डेरिवेशन हम करेंगे, इसके बाद करेंगे. ओके, सो अब एक ब्रेक ले लेंगे इसके बाद. सो मैं आपको आज क्या बताता हूँ मैं आपको. ये स्केच याद रखो आप, ये कैसा रहता ट्राइक्सियल शियर टेस्ट, और इसमें सैंपल ऐसा रहता, इसमें हम क्या क्या करते ये आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद ये सब बता दिया आपको. एंड देन
I explained you about the Mohr circle. इसके बाद एक छोटा सा break ले लो. फिर I drawn the tangent to this and I told you how to find C and phi. And when it's the pore pressure water is also considered separately, then also we take this one after confining pressure के लिए. वो combinedly कंसिडर करते तो और ये है, लेकिन जब हम स्पेशल लेते हो डैश होके ये बन जाता है. So this is the Mohr circle for general Mohr circle. This is C, this is phi. But the thing is, for sand, this is the ideal Mohr circle, and for clay, this is the, because he may give you this figure and ask for which side this Mohr circle is there. So then you can write clay here. Suppose if it is passing through origin, you can say it is sand here. This is for